Sir, we are going to begin it. Respected participants, welcome to JIMA webinar. We are privileged to have among us Mr. Rahul Chauhan from IGrain India as the speaker from the industry. Rahul Chauhan is an engineer by qualification with over 15 years of corporate industry experience, currently serving as the director of iGrain India, a market intelligence and agri research organization established in 2015. Under his leadership, iGrain India provides data-driven insights, forecast, and analytical reports on major agricultural commodities, including wheat, pulses, rice, and oilseeds, along with policy-led sectors such as ethanol and biofuel markets. He is known for his commentary on evolving trends like rice allocation for ethanol production and its ripple impact on sugar and corn, as well as broader market dynamics influenced by policy changes and trade developments. iGrain India's analytics, research inputs, and commodity outlook are widely referenced by traders, millers, agribusiness companies, exporters, processors, and allied industries. iGrain India is associated with prominent bodies such as BSAF, IPGA, ISMA, Rural Floral Mills, Federation of India, Global Pulses Confederation, C and SOPA, and is regularly featured through expert opinions and analysis in newspapers, business channels, magazines, and agri media platforms. I would now like to invite our knowledge partner to start knowledge share. Over to you, Mr. Chauhan. Namaskar. Thanks, Jima, for inviting me on this webinar. And in this webinar, we will talk about this rice, sugarcane, sugar, and your maize. So, if you see from last 3 to 4 years, due to ethanol usage increase in India, the total market of three commodities it drastically changing. Especially if you see in maize, the prices 10 year backs, the maize prices they were about below 1,000 rupees. Now they have last season they have reached about 2,700 rupees at maximum, and now they are trading about 1,800 to 1,900 rupees per quintal. So due to this ethanol usage all over India, all the markets like sugar and along with the maize, sugar and rice is also got change in rice. Government is providing pan India on same rates for rice distillers, which is also something like that. It has changed the market drastically. Now the people they are moving as you can get rice from FCI easily as compared to other resources. So market is shifting for ethanol manufacturing. Market is shifting towards the rice. So I have made a small presentation which I'm going to share with you. Just give me a second. I hope it is coming. So it's very, I have not made it very big PPT presentation so that we can give more time to question and answers, which is the main backbone of this presentation. So I will quickly move on the maize first. So these you will see on this slide, you can get how much production in India, what is the demand, how much is the consumption, what are the prices in India, and how much we are exporting and importing. If you see, let's talk about production. These figures, they are in million metric ton, and 1 million metric ton is equivalent to 10 lakh ton. So you will see from 2020 to 25 crop season, the production of maize in India is increasing drastically. And these figures are from USDA. If you talk about current market, Indian market, the production may reach about 470 lakh tons also. And you will see the consumption of maize in domestic usage is also increasing. The main reason is due to ethanol usage.
and ethanol usage of maize is constantly increasing in India. Let's talk about prices. The prices last season, the prices they have reached at a record level of 2,700 in some of the markets, and now they were due to oversupply of maize and less, ethanol tender quantity. The prices they are coming back to about 1,700 to 1,800. If you talk about exports into last season from April to 20 October, we have exported about 2.3 lakh tons of maize from India. It is now this year it's slightly above than this thing, above than the last year. If you talk about the imports they have increased in last financial year in April to October. The export they have reached about 7.23 lakh tons. The reason of increase in export was the high prices in India, and it is especially imported from Myanmar and Ukraine, and that crop is non-GMO crop. So continuous increase in maize acreage has led to strong production, and it is totally driven by the strong ethanol demand. And high prices of maize, they have pushed poultry and feed industry to shift towards DDGS, which is byproduct of maize and rice in the usage of ethanol. So ethanol consumption from maize may decline in future, as I told you that FCI is giving rice at nominal prices, at same prices in all over India at all the locations. Now the market dynamic are changing, and it is, you can say, maize versus rice for ethanol and feed usage. Maize in old time it was considered was not very favorable crop among the farmers as the prices were not attractive. Now it has been changed as a it has been emerged as a golden crop in India. As I told you that 10 years back the prices they were very less, and they have increased to record 2,700 per metric ton on the increasing demand from the ethanol industry. So recent in last tender of OMC companies, they were less, and they have uh, changed the usage of ethanol drastically in India. And now the ethanol stocks in India is more than the demand. So current maize prices they have corrected to around 800 rupees per quintal right now in these days. The import is reducing and export is also reducing. Second sheet. Let's talk about rice. In rice also, the production of rice in India is constantly increasing due to the assurity of the government. They are procuring rice on FCI is procuring rice on MSP, and MSP is every year MSP is being increased by the Agriculture Department of India. If you talk about you can see the exports in this year, we may have good quantity of exports, but the problem with the export is that rupees is depreciating, and government of India last they have prohibited exports of rice, and which they have opened in this season. But due to the restriction on rice, our neighboring countries they have gained the market share, and now the market is oversupplied by international market is oversupplied by rice, and prices they are not moving ahead. Export, if you talk about export, of course, export is increasing. If you talk about the turnover on the export, it is exports, it is reducing because the prices of rice they are very less. So what is happening in India? We have a huge pile up of stocks in central pool, which I will show you in the next sheet. And from last 3 years, due to record production, less demand, and less export, the prices of paddy or paddy, they are below MSP, due to which the farmers, all the rice industry, which includes farmer traders, exporters, stockists, they are under stress. They nobody knows what is going to happen with the rice. And India is losing its own market, as I told you, because exports were banned, and FCI is giving rice. FCI is giving rice to ethanol distilleries at very nominal prices of 2,320 rupees,
and the allocated quantity is about 5.2 million metric tons for ethanol distilleries. So if we talk about prices, the local paddy prices in the market, they are about 1800 to 2000 rupees. This is for non-basmati rice versus MSP of 2369 for common variety, and A grade is mentioned over here. It is 2389. This is the procurement of paddy and rice in India. Due to the record production from consecutive years, the paddy procurement is also increasing in India. So if you see up to the last week in this current Kharif 25 season, we have procured about 412 lakh tons of paddy, and if you convert it into the rice, it will be about 260. It will be about 276 lakh tons of rice. Last year, paddy procurement in Kharif season, it was 768 plus lakh tons, which is equivalent to 514 lakh tons, and total of this paddy, it was 913, which includes the Rabi crop also, and 612 lakh tons of rice. So in 2023 to 24, total procurement of paddy was 815, and it was, if you compare with rice, it is 546 lakh tons. And some of the states, government of India, like in Chhattisgarh, they have procured rice at 3,100 rupees per quintal. And if you see about these figures, every year the procurement of Indian rice is increasing, due to which the central the central stocks in the pool is also very. These are the figures which is given taken from FCI, Food Corporation of India. If you see on 1st of December 25, the uh, stock of rice in central pool was 31.1 million metric ton, and which was 2.8 in last December, and in 23 it was 18.3 MMT. If you check with this year stocks, the stocks are above 32, about 32 lakh tons than the last year. And if you compare with 23, it is about 12.8 million metric ton. And stocking norms is 76 lakh tons. So right now we are having a buffer stock above the buffer. There is a stock of 23.5 million metric ton of rice availability in India. In this, unbilled rice is not mentioned, and below figures you can check also that the stock in central pool of unbilled rice, it is also increasing because the procurement is also increasing, and the consumption is not so consumption is also not so improving. I'm talking about domestic human consumption. So if you see the rice offtake through central agencies, and of course, these figures they have taken from FCI, all government agencies in this season till September 25, the consumption or offtake of rice, you can say it is 19.6 million metric ton, and in OMSS it is 3.1 million metric ton. Now you will see the figures how much the market scenario of rice is changing. In 21-22, only 1.7 lakh tons of ethanol was used, and of rice was used to make ethanol, which increased to about 15.15 lakh metric tons in 22-23. 23-24, it again reduced to 8.96. Now you will see in this year there is a huge usage of rice to make ethanol by the rice ethanol millers, distillers. Sorry, until September we have taken about 23.8 lakh tons of rice for ethanol. If you go on total figures, and you can see from now we have many months left, so the proposition or the quantity of rice in ethanol, it will increase. So you can say, as these figures are saying, that there is a huge stock of rice available in India, and under OMSS, rice sale is improving, but not too much. And rice sale to ethanol industries is also
increasing. It may, I feel that in future, if there is a government of India or FCI, they put they increase the allocation of rice to ethanol, it may surpass the usage of maize in a couple of years. So pan India, the prices are same, and for this ethanol manufacturing. For export usage and prices, these are three points which I want to share with you. And export, as a rice export restriction was called off in this month in March 25. And as per APEDA, from April to October 25, we have exported about 11.86 million metric ton of rice and non-basmati rice. And exports in last year, it was 9.12 lakh tons, and in 23 it is 9.9 million metric tons. So you can check on these figures that export of rice from India, it is increasing. As per TREA, from January to November, the total exports of all varieties of rice, it has reached about up to 18.5 million metric ton, which is about 25% higher than the last year. And this year we expect about 22.5 million metric tons of export of rice from India. So export demand is not very strong due to weakening of rupees. And there is the export is due to weakening of rupees, it is helping traders and traders to do the deals, but prices, they are not very much competitive. Till September 25, FCI has, as I told you, FCI has uploaded about 25.3 million metric ton of rice. And the usage of ethanol, it is continuously increasing if you compare with last few years, and total about 54 metric tons of ethanol can be used, which is allocated by the government of India for ethanol manufacturing. So I think 100% of rice will be used as per the allotment by the government. And due to huge stock and higher availability in the market, so I don't think so that the prices, they will move unless or otherwise there is some natural calamity or other challenges. But I think the prices of rice in India, they will be in range bound at on current levels. Let's talk about sugar. In sugar, what is happening? Last year, there were challenges in crop. There were less rains in Maharashtra, Karnataka, and in Uttar Pradesh, the crop was affected by some red root disease. So due to which the production of sugar in India, it was in last season, it was 29.5 million metric ton. And for ethanol, the diversion was 3.4 million metric ton. And after diversion, you can say that sugar production in India in last season, it was 261 lakh tons. If you talk about the consumption, it is 28 million metric ton in India, and exports, they were banned in last year, and they had allowed only 10 lakh tons of export in last season, out of which 9 is being exported. So before beginning of this new season, the balance stock of sugar in India, it was 5 million metric ton, and these figures, they are taken from ISMA. And now let's move to the current season. In this season, if you take 5 million metric ton of opening stock, and the production, it is increasing in India as rainfall was good, and plus the area of sugarcane in India, it is increased. So production from last year, it can increase about 4.8 million metric ton. And for ethanol, we are taking same quantity of sugar to be used. And if you talk about consumption will be higher than the last year, about 5 lakh tons. And export, they have allowed only 15 lakh tons of exports from India. And in the last end of this season, the remaining stock or balance stock can reach up to 10 lakh tons if you compare with the last year. So these figures, they are taken from the ISMA, and these are first advanced estimates. Now, what is happening? Government is allocating this ethanol tenders. OMCs companies, they are purchasing this ethanol from various industries. Now, what is happening? In last, if you talk about first cycle of ethanol in 24-25, the total allocation of ethanol was 837
crore tons, and out of which 86% was being procured or purchased, and sugar-based ethanol was 312 crore liters, grain-based what 525 crore liters, and sugar diversion it was 37.5 million metric ton, and total grain required to make this ethanol it was 135.8, and out of which the quantity of maize it was very much high. And in now what and what happened in this new tender of cycle one of this 25-26 tender, the allocation of ethanol it was decreased about the total sale of ethanol. It was only 59% of total allocated quantity of ethanol. So out of which sugarcane ethanol it declined to 289 crore liter, which is a setback to the sugar industry because if you talk about 6 years back, the percentage or the percentage you can say or the quantity of ethanol, sugar-based ethanol, it was very high, and now it is being reduced. In 1 year back, they have put ban of making ethanol from sugar and other sugar-based things, and because the production of sugar, as I told you in earlier slide, the production of sugar was less. So what is happening due to this standard, the total market scenario of ethanol, which is being produced by grains and sugar, it has been totally drastically changed, which I will show you in next week. So what happened that due to this 1048 crore liter ethanol allocation, grain-based ethanol it was 760, and the required quantity of grain it has been increased to 189 lakh metric ton, which was 135.8 in 24-25. So maize alone they have accounted 126 lakh tons of uh, lakh tons of maize to make ethanol. Now it may decrease in future. So what is happening due to ethanol program has shifted decisively from sugar to grains, raising grain demand and lower acceptance signal stress in executing and supply balance. So what is happening as the allocation of ethanol and sugar is reduced, and the prices of ethanol which is been made by sugarcane juice, sugar, B molasses and C molasses, they are much, you can say they are not profitable. So the production cost of ethanol, it is very high as compared to the cost. This is the cost of ethanol prices, and a few of the points which I have added. From sugar juice or sugar syrup, it is about 65.61 rupees per liter, and B molasses it is 60.73. C molasses, although production from this is very less, it is 57.97. Now you can see the highest prices of ethanol is ethanol is from the maize driven produced. So the prices of ethanol made from maize it is 71.9, and from damaged grain it is 64, and the surplus rice stock which is available with the government is 58.5. You can see the prices of rice it is much lesser than the maize, but rice, as I told you, it is very easily available. So the usage of rice it may increase. So as I told you that due to this current tender, the whole market scenario has been changed. Only 59% of allocated ethanol is being purchased by OMCs, and all the industry of ethanol it is being you can say it is under pressure, and they have plenty quantity of ethanol available with them. So what happened due to this standard sugar-based ethanol? It has been slipped to 289 crore liters, and even the diversion of sugar, it is also reducing. It is about 33.7 lakh tons. Grain-based ethanol, the quantity has been increased about 760 crore liters,
and about 189 lakh ton of grains was used to make ethanol, out of which the quantity of maize was 126 lakh metric tons. So all ethanol manufacturers, they are asking government to increase the prices of ethanol and the usage of ethanol. ISMA is asking government of India to increase the blending of ethanol from 20 to 22%. So that they can get demand from OMC and they can run their plants smoothly. So this is the summary of the ethanol allocation and other details which I was sharing with you. Only as I told you that only 86% of total allocated quantity was taken in 24-25, which is reduced drastically to 60%. This is the breakup of various things from which ethanol is derived. You can check, you can see the diversion numbers if you talk about in lactans. Sugarcane, from sugarcane juice, about 24.9 lactans of juice was used. In wheat molasses, it was 8.8. These figures are there in front of you. You can see in sugar it was 33.7, and grain, damaged grain, it was 11.3, and the surplus grain food, which you can say FCI, it is 51.8. So these are the various factors which are affecting the market in India, and this is the presentation which I have made. And thanks, Jema, for giving this opportunity to me to express my views on grains. Thank you very much. Also, I'd like to add one thing that the MSP of the sugar mills, they have invested huge quantity of huge amount of you can say, and they have invested a huge amount of rupees money in making distillery plants and this ethanol making plants, and their capacity are not being used 100%, and due to the unusage of this their capacity, they are running losses, and they are asking government to increase the MSP of sugar also, which is a long pending issue. So overall, sugar industry is facing very huge pressure due to certain policies and due to the less usage of ethanol in less usage of ethanol. So that's all from me. You can please. Rekha ji? Yes, sir. Yeah. So the session is now open for questions. Please feel free to share yours. If you have any query, then you can ask, please. Yes, sir. I think Bajrang Chaudhary, sir, has some queries. Sir, you can please ask. You have raised your hand. या राहुल सर, आपकी फर्स्ट स्क्रीन जो थी मेज आउटलुक, एक बार क्या दोबारा ओपन कर सकते हैं? Right. This one? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट फर्स्ट सर, इसमें 24-25 दो बार दिया हुआ है. कैन आई नो से? हाँ, इसमें कुछ है, ये एक्चुअली गलत हो गया है इसमें. आप इसको देखिए, लास्ट वाली फिगर्स को देखिए, आपके 24 फिगर? अच्छा, 1.45 इज लास्ट फिगर. ओके ओके. एंड देन एक्सपोर्ट डाटा ऑफ मेज इन टनेज. This is in ton, yes, in tons. ओके ओके ओके. And we are importing only from two countries, and now US is putting pressure on us to import GMO pulses from them, and that will be very, if government allows, that will be very bad for the industry, because industry is industry is already oversupplied with the maize, and I don't think so. If Niti Aayog, they have given roadmap of this ethanol, I think 5 to 8 years back, and there is no roadmap given by Niti Aayog. So industry is a little bit stressed that what will be going to happen to ethanol industry in future. Sir, if you have any state-wise, year-wise data of maize crop?
Yeah, I can share with you. Personally, I can share. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. Any other query? राहुल जी, मेरा नाम सुरेश सिंह चौहान है। जी आई एम चौहान फ्रॉम ज्वारी एनबीएन बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। जी। Just I wanted to have your point on the maize prices we have seen in the last season in the Madhya Pradesh. Some news we are having that the maize is selling at the rupees 1100, 1200 rupees per quintal. So can you sir please put your input? What was the main reason behind this? चौहान जी, तो अभी जो प्राइसेस हैं दे आर अबाउट 1700 to 1800 इन द एवरेज प्राइसेस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया. द प्राइसेस Right. which you are saying 1100 rupees, they might be for damaged grains, because of in last if you see in last Rabi or summer season, due to rains in Bihar, the crop was damaged, and these prices I think they will be for damage or not good discolored grains or broken corn. Actually, sometimes what happens, this kind of news make very panic situation in the market, and even the promoters also said their procurement team भाई 1100 रुपये में मक्का बिक रही है मक्का का क्या और चल रहा है? आप किस रेट पे खरीद रहे हैं। मक्का तो का जो आप एक रीजन बता रहे हैं, इस तरीके के रीजन्स जो हैं वो नरेशन में नहीं होते एट द टाइम ऑफ जब कोई न्यूज मार्केट से आ रही होती है। तो और वो इस तरीके के जो मार्केट की जो फिगर होती हैं वो बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं। Yes. आपको क्या लगता है? एक्चुअली चौहान साहब क्या है कि जो फिगर्स जो ये ली जाती हैं, जैसे आपने 1100 रुपये लिया है, तो ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, और आप भी जानते हैं उसको इनाम से भी ये लोग लिंक करते हैं, तो उसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स आती हैं। आप जानते हैं कि इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री एंड मेज इज़ ऑलमोस्ट ग्रोन इन एवरी स्टेट। सो कुछ एरियाज में अगर डैमेजेस होते हैं तो ऑफकोर्स प्राइसेस तो डाउन आएंगे ही। तो जो प्लेटफॉर्म जिस पर ये प्राइसेस जो रेफरेंस लेते हैं हम लोग, वो एक्चुअली हर टाइप का उसके अंदर आता है। उसके अंदर अच्छी क्वालिटी भी आएगा, उसके अंदर सबसे खराब क्वालिटी भी आएगा। तो जो लो प्राइसेस हैं, जब मार्केट डाउन आता है तो पीपल दे ओनली सी ऑन द लो प्राइसेस। जब मार्केट बढ़ता है तो लोग जो है केवल बढ़े हुए प्राइसेस को देखते हैं। तो ये एक थोड़ा सा उसमें जो पोर्टल है, अगर उसमें कुछ क्वांटिटी वाइज जैसे FAQ है, फेयर एवरेज क्वालिटी, या SQ है, या डैमेज क्वालिटी है, अगर उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दें उस पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर, तो थोड़ा हमें और इस पर क्लैरिटी मिल सकती है। बाकी हम लोग जो ट्रैक करते हैं प्राइसेस को चौहान साहब, ये हम लोग खुद ही अपने ऑफिस से करते हैं, और हमारे जो लोग हैं मंडी में जाते हैं, वहाँ से हम ये ओरिजिनल जो प्राइसेस है वो ट्रैक करते हैं, और जो प्राइसेस इंडस्ट्री में दिए जाते हैं वो फेयर एवरेज क्वालिटी के दिए जाते हैं। सर, बीइंग बायर, बीइंग मैन्युफैक्चरर, हम सभी का इंटेंशन ये रहता है कि कोई भी सिचुएशन विन विन होनी चाहिए, जी फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन इस साल मेज के प्राइसेस, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो डाउन रहे, और मध्य प्रदेश के फार्मर्स को उस तरीके के प्राइसेस नहीं मिल पाए जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। जी। इवन बहुत सारी मीडिया न्यूज में ये भी बताया गया कि भाई प्राइसेस ऑलवेज जो है वो MSP से नीचे ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इथेनॉल सेक्टर का प्राइसेस के लिए एक रोल है? बिल्कुल सर। देखिए प्राइसेस देखिए सर, प्राइसेस कैसे बढ़े आप भी जानते हैं कि किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। 2700 रुपये बिकी, 2600 रुपये बिकी मक्का, क्योंकि उस टाइम जो एक कहते हैं ना, एक भेड़ चाल कह सकते हैं आप उसको, कि सब के सब इथेनॉल के पीछे लग गए। और कितनी यूनिट्स आपके एरियाज में लगी होंगी, आपने देखा होगा बिहार में कितने स्टॉकिस्ट आ गए हैं, कितनी डिस्टिलरीज लगी हैं। तो वो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये जो टेंडर आया है ये 25-26 वाला, उसके बाद में पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो गया है। पहले जो इथेनॉल हमारा चीनी से बनता था, फिर वो मक्का में कन्वर्ट हुआ, मक्का से अब वो राइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल जो प्राइसेस हैं सर, वो प्रोडक्शन जो है आपकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही चलते हैं। अभी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो ऑफकोर्स प्राइसेस जो है डाउन आएंगे। और मुझे डर है अगर ये एलोकेशन इथेनॉल का नहीं बढ़ा, क्योंकि इथेनॉल में ही मक्का का अधिकतर
मक्का का जो यूसेज है वो इथेनॉल में ही खप रहा है। और जो इथेनॉल के बाद में जो डेरिवेटिव्स आते हैं जैसे डीडीजीएस है, तो डीडीजीएस की सेल काफ़ी सस्ता होने के कारण मक्का की जो ओरिजिनल फीड वाली सेल थी वो भी थोड़ी बहुत अफेक्टेड होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो ऑयल सीड्स मार्केट है इथेनॉल की वजह से, आप भी जानते हैं, आप इस ट्रेड में जो भी खली के प्राइसेस थे, जो व्हीट ब्रांड जिसको हम चूरी बोलते हैं, उनके प्राइसेस भी काफ़ी ड्रास्टिकली डाउन आए हैं। तो इस इथेनॉल जो ये प्रोग्राम है, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, अच्छा प्रोग्राम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इस इथेनॉल के प्रोग्राम की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी सबके सब जैसे किसान, देखिए किसान तो वही उगाएगा जो जिस समय किसान बिजाई करता है तो वो उस टाइम के प्राइसेस देखता है, या फिर वो प्राइसेस देखता है कि उसने लास्ट सीजन में वो किस प्राइसेस पे वो क्रॉप बेची है, और उसी के अनुपात में वो अपनी बिजाई करता है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो एरिया है ड्रास्टिकली इंडिया में मेज का एरिया बढ़ता जा रहा है, खपत वही की वही है। और तो इससे क्या है कि ओवर सप्लाई इस टाइम मेज की मार्केट में मुझे दिखाई दे रही है, और प्राइसेस जो हैं अभी डाउन चल रहे हैं जब तक सर मेरा लास्ट पॉइंट है, जी। मेरा लास्ट पॉइंट है। देखिए आप, जैसा कि आपने बताया कि मेज के प्राइसेस बढ़ने में इथेनॉल सेक्टर का एक बड़ा रोल रहा है, और अभी एलोकेशन उस तरह से नहीं मिल पाई है जो कि इथेनॉल की मैन्युफैक्चरर, खासकर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आपके जैसे, हालांकि आप डेटा देते हैं मार्केट में, बट आपके जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं, अगर वो इस बात को और आगे तक उठाएं और गवर्नमेंट तक भी पहुंचे ये बात कि भी इथेनॉल का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, अगर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आगे इम्प्रूव करेंगी, अगर उन्हें एलोकेशन प्रॉपर्ली मिलता है तो डेफिनेटली फार्मर्स को फायदा होगा। बिल्कुल सर, फार्मर्स देखिए, फार्मर्स, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। और जब तक फार्मर्स को प्राइसेस नहीं मिलेंगे वो क्यों, कैसे क्रॉप डालेगा। आपकी मैं बात पे आना चाहूंगा, जो ये वही इथेनॉल में जो अभी चैलेंजेस हैं, देखिए एक नया सेक्टर बन के आया है इथेनॉल। आप भी जानते हैं कि 5 साल से ये नया सेक्टर बनता आ रहा है। तो धीरे धीरे जो है इसमें और भी हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि जो जैसे मैंने अभी लिखा था इसमें, नाउ फॉर इथेनॉल इट इज शुगर वर्सेस राइस वर्सेस मेज। सो किटी वही है, बट आपको उसके अंदर से आपको देखना होगा कि कितना किस में इस्तेमाल हो रहा है। और प्राइसेस गवर्नमेंट को हम लगातार, जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ कंज्यूमर अफेयर्स में। और इस्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या जो इवेंट्स होते हैं उसमें हम हर बार ये सवाल उठाते हैं कि आप जो पॉलिसीज हैं आप इनको कांस्टेंट रखिए। अभी तक देखिए हमारा नेक्स्ट जो 10-12 साल का जो इथेनॉल का है उसका अभी तक रोड मैप तैयार नहीं हुआ। तो जो इन्होंने ऑलरेडी इतने लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके क्या हाल होंगे, और किसान राइट। के पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है उनके साथ क्या होगा। ये थोड़ा सा एक गंभीर विषय है, इस पर फोकस जरूर देना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतीक जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर नमस्ते, मैं व्यापारी हूँ बिहार से। मैं एक्चुअल में जानना चाह रहा था कि अभी आने वाली रबी सीजन से पहले मक्के का कितना स्टॉक बिहार में देख रहे हैं और कितना कंजम्पशन देख रहे हैं सर? कहीं ओवर सप्लाई की पोजीशन तो नहीं है? देखिए सर, बिहार में क्या है सर, देखिए बिहार जो है आप कह सकते हैं कि जिस टाइम बिहार में क्रॉप आती है उस टाइम अन्य राज्यों में क्रॉप जो है कम रहती है। और बिहार की जो मक्का की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है पूरे इंडिया में, और वो एक बेंचमार्किंग है हमारे लिए बिहार में। बिहार में क्या हो रहा है सर कि बिहार में जो मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, मक्का का उत्पादन ऑफकोर्स बढ़ा है। जो लोगों को एक्सपेक्टेड था कि मक्का का यूसेज इथेनॉल में बढ़ना चाहिए, अब वो मक्का का यूसेज इथेनॉल का उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रहा। तो जो अभी भी लोगों के पास स्टॉक पड़ा है, जो उन्होंने 2500 के लिए है, 2200 के लिए है, अब वो फंसे हुए हैं, दे डोंट नो कि आगे चलकर क्या होगा। तो ये हमें दर्शाता है कि ऑलरेडी मार्केट में जो है, खासकर बिहार में, आपने बिहार के बारे में पूछा है, ऑलरेडी वहां पर मार्केट जो है ओवर सप्लाइड हो चुकी है और माल बहुत ज्यादा है। जब तक इसका यूसेज नहीं बनेगा, इथेनॉल का यूसेज कह लीजिए या फीड में इसका यूसेज नहीं बढ़ता, तब तक मुझे नहीं लगता कि बाजारों में ऐसी कोई बड़ी तेजी या कीमतें बढ़ेंगी। तो ये ओवर स्ट्रेस ही रहेगा मार्केट मेरे हिसाब से। सर ये जो अभी करंट सप्लाई और डिमांड की जो सिनेरियो है, रबी से पहले यही प्राइसेस बने रहेंगे या फिर वापस जो है डाउनवर्ड आ सकता है बिहार में भी? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से तो डिस्टरबेंसेस हैं सर। हाँ, मैं वही, एक मेरा ये भी पॉइंट था। अभी कुछ
पिछले 6 महीने से बांग्लादेश में ये डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, और इंडिया से बड़ा एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश को होता है। अगर वो एक्सपोर्ट का सहारा ना मिला तो उससे भी हमारे यहाँ जो वहाँ जितना भी जाता है, आई थिंक वहाँ जाता होगा आपका 3 से 4 लाख टन जाता है, तो वो भी अफेक्टेड रहेगा, और वो इंडिया में ही रहेगा, वो ओवर सप्लाई रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा जो सबसे चिंता का विषय जो मुझे लगता है कि वो है, अगर प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएमओ या नॉन जीएमओ को इम्पोर्ट वहाँ से अलाउ कर दिया, चाहे वो इथेनॉल बनाने के लिए कर रहे हैं या किसी और पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत एक देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या लिया जाता है। तो ओवरऑल थोड़ा हमें संभल के काम करना चाहिए, सावधानी के साथ अपने लेवल के साथ काम करना चाहिए। ज़्यादा लंबी तेजी में ना बैठे तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है कि आगे कुछ बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। और जो भाव है मौजूदा लेवल के आसपास ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो भी आगे इसी के आसपास ट्रेड करेंगे। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है इंपोर्ट जीएमओ, और सामने रबी फसल के लिए आप बिहार में क्या प्राइसेस देख सकते हैं कि ये एक अभी रेंज रहेगी अगर इंपोर्ट नहीं होता है तो? नहीं, देखिए, अगर इम्पोर्ट नहीं होता तो प्राइसेस जैसा कि मैंने बताया उसमें, और अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो मार्केट अभी ओवर सप्लाइड है। और जो अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं मैं इसको बहुत रीजनेबल प्राइसेस मानता हूँ। इससे नीचे मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। 150 रुपए की रबी में सर, आने वाली रबी में? रबी की, अच्छा, रबी की अगर बात करें तो रबी मुझे लगता है कि लास्ट सीजन में किसानों ने अच्छा पैसा कमाया है या उनको वाजिब दाम मिले हैं, तो आगामी रबी क्रॉप में भी बिहार में एक जो एरिया है वो बढ़ सकता है। और एरिया बढ़ा तो प्रोडक्शन जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी प्राइसेस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो रेंज बाउंड जो अभी चल रहा है प्राइसेस, वो 1700-1800 के आसपास या हद से 1900 रुपये आ सकता है। जी, थैंक यू सर। राहुल जी, गुड इवनिंग। विवेक लीला बोल रहा हूँ, बिहार से बोला मैं भी। मेरा हम लोग का स्टार्च प्लांट है। मैं एक्चुअली परचेज देखता हूँ यहाँ पर। तो बिहार रबी वालों को क्रॉप का बिहार वालों मैं को देख रहा हूँ। बहुत प्यार है सर मक्का से बिहार। जी 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 सर। जी बताएं। सर मुझे समझना है सर कि मक्का का मेन कंज्यूमर तो फीड इंडस्ट्री है, आई थिंक। जी 50% शेयर फीड इंडस्ट्री का आता है। जी तो अदर शेयर कहाँ कहाँ है? इथनॉल है, इथनॉल कितना परसेंटेज है? स्टार्च कितना परसेंट है? कितना फिगर है, क्या है, बता पाएंगे क्या पूरा ईयर का? देखिए, इथेनॉल अभी जो जब से इथेनॉल आया है सर, थोड़ा सा जो कंजम्पशन पैटर्न में वो काफी बदलाव आया है। पहले ये मेरा ये मानना है कि पहले करीब करीब 50 से 55% फीड के अंदर यूसेज होता था, और बाकी जो है स्टार्च के लिए या ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होता था। अभी जो है फीड में जो प्राइसेस हमारे बढ़े थे, तो उसका जो यूसेज है मक्का का, मैं प्योर मक्का की बात कर रहा हूँ, वो यूसेज जो हम्म है करीब घट के 30% में मानता हूँ कि वो रह गया है। और जो मक्का का जो बाय प्रोडक्ट निकला है मक्का से इथेनॉल का, डीडीजीएस, उसका लगातार हम्म बढ़ता जा रहा है। तो जी ओवरऑल डायरेक्ट अगर आप बात करते हैं डायरेक्ट फीड में मक्का का जो ओरिजिनल आप क्या 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 जो दाना है उसका इस्तेमाल जो हम्म है वो घटा है, लेकिन डीडीजीएस का पैरेलली बढ़ा है। ओके। और इसके अलावा सर स्टार्च और इथनॉल में क्या रेशियो जाएगा सर, मोटा मोटा? वही रहता है सर, 15 स्टार्च जैसे इथेनॉल का 42 लाख टन का, 42 मिलियन मेट्रिक टन 15 का से बोले प्रोडक्शन है, तो डिमांड कैसे कैसे है उसका? 15 से 20% में लगाता हूँ कि स्टार्च और इसमें यूज होता है। अच्छा। बाकी एक्सपोर्ट में और इथनॉल में और इस सब ये में? एक्सपोर्ट है, ह्यूमन कंजम्पशन है। और हम्म मक्का से आप ये जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी मक्का का काफ़ी यूज होता है। जैसे आपके ये जो बच्चों के जो सेरेलैक वगैरह आते हैं, उसमें ज़्यादा हम्म। यूसेज होता है। तो मक्का का जो है सर ओवरऑल यूसेज आप ऐसे नहीं बता सकते, बट जो है हर चीज़ में आप ये देखेंगे, आप ध्यान से अगर कोई प्रोडक्ट ले भी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मक्का का कुछ अंश जरूर होगा। ओके। एक्चुअली क्या है सर, हमने जो बार बार डिस्कस कर रहे कि इथनॉल आने से ये मक्का का इम्पैक्ट पड़ा मार्केट, मगर सबसे बड़ा मार्केट कैप है आपका फीड इंडस्ट्री का। और फीड इंडस्ट्री कभी भी स्टेबल नहीं रहा है, जी, देखिए, मैंने कि अभी हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता गया उसको। सब विवेक जी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि मक्का ही हम्म। मक्का को खा रही है, 2 महीने पहले की बात है। तो उसमें हाँ हाँ। हाईलाइट किया था कि मक्का जो 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 उनका ओरिजिनल जो फीड जो इंडस्ट्री थी, ओरिजिनल यूसेज जो था मक्का का,
अब वो रहा नहीं है, और मक्का से जो डीडीजीएस बन रहा है, जो मक्का का ही एक उत्पाद है, वही हम्म मक्का की मार्केट को खा रहा है। हम्म। ये थोड़ा है इशू है। और आप सभी जानते हैं कि जो डीडीजीएस है वो कितना उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा हाई है बहुत उसमें। ज्यादा होते हैं। और उसका असर धीरे धीरे जो चिकन इंडस्ट्री है, एग इंडस्ट्री है, उस पर अब धीरे धीरे दिखने लग रहा है। जो चिकन इंडस्ट्री है उसमें उनको जो उनका जो वेट है वो भी रिड्यूस हो रहा है। जो हम्म। एग्स हैं उसकी जो कहते हैं ना उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, मोर्टेलिटी जो है हाई हो गया। हाँ हाँ, वो भी उसकी जो है आकार जो है उसका इसका अंडे का, चिकन का। वो भी छोटा होता आ रहा है। और उसके अंदर हम्म। पदार्थ हैं जो ह्यूमन एज ए ह्यूमन अच्छे नहीं है, वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। समझ गया। थैंक यू थैंक यू। विवेक जी, जी एक बोलिए। जो आपका क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा डाटा मेरे पास है, अगर आप अलाउ करते हो मैं बताता हूँ कि 121 प्लीज। लाख मीट्रिक टन करीबन फीड पोल्ट्री में पहले जाता था, और हाँ इतना ही हाँ। करीब करीब एथेनॉल में जाने लग गया है। मतलब एथेनॉल की भी डिमांड करीब करीब फीड के बराबर आ चुकी है। और अच्छा। आप अगर केटल देखते हो तो केटल में करीब करीब 35 से 36 लाख मीट्रिक टन के आसपास जाता है। तो हम्म। ऑलमोस्ट जो है 157 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है लास्ट ईयर का, जो अगर कंजम्पशन देखते हैं तो पोल्ट्री केटल में गया हुआ है। और अगर हम हम्म। एथेनॉल में देखते हैं तो 121 लाख टन और 3 लाख टन के आसपास हमारा फूड में चले जाता है। वैसे अच्छा। स्टार्च तो बहुत कम है, स्टार्च का तो मुश्किल से मुश्किल ये मान के चलिए कि 50 लाख मीट्रिक टन के आसपास का कंजम्पशन है। ओके। हाँ, स्टार्च का भी, मेजरली कंजम्पशन फीड और एथेनॉल में ही जा रहा है राइट नाउ। बजरंग जी, स्टार्च हम्म। की कंजम्पशन इंडिया में मक्का का रिड्यूस हुआ है लास्ट कंपेयर से, लास्ट ईयर से। सर स्टार्च का जो डाटा दिखा रहा है सर कि 24-25 में जो दिखा रहा था वो 50 लाख मीट्रिक टन दिखा रहा है, और हम्म। 23-24 में जो दिखा रहा था वो 51.6 तो दिखा मगर रहा था। स्टार्स का प्लांट तो बड़ा भी है और सबका प्रोडक्शन बड़ा भी है, लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं। हम भी नहीं स्टार्स स्टार्च का इंडस्ट्री से, ये लीगल रिसोर्सेज है, हम लोग का भी प्रोडक्शन हम्म। बढ़ा है हम लोग। और अभी हम्म, जैसे अंबुजा भी आ गया मालदा में, और भी देखते हैं, सबका अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा इस साल बढ़ा है सर। स्टार्च है। अगर देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि इस स्टार्च जो है 53 लाख के आसपास कंज्यूम करेगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्टार्च इंडस्ट्री को ही पड़ता है, क्योंकि उसका एक वन एंड ओनली रॉ मटेरियल मेज है। बाकी हम्म इथेनॉल के पास ऑप्शन है कि वो राइस में चल जाए या गन्ना में चल जाए, फीड इंडस्ट्री हम्म। में चल जाता है, मगर हम लोग मर जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये है ना सर, क्रॉप साइज भी देखेंगे ना तो 270-75 लाख से करीब करीब 430 के ऊपर पहुंच गई है। तो जितना फीड का, हम्म जितना एथेनॉल का रिक्वायरमेंट है उतना क्रॉप साइज बढ़ गया है पहले। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक तो चौहान जी, रवि तो सर, रवि डीडीजीएस अग्रवाल के सर। रेट्स जो हैं वो चौहान जी। डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं, डीडीजीएस के रेट्स। तो आपका क्या सजेशन रहना चाहिए कि वेदर टू गो फॉर द ट्रेडिंग इन इंडिया और टू एक्सपोर्ट आउटसाइड? देखिए, अभी मैंने एक ट्रेंड सुना था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कि डीटीजीएस का उसको और उसकी प्रोसेसिंग करके ये टॉक्सिन्स निकाल के, और उसमें कॉर्न ऑयल है वो निकाला जा रहा है, और जो उसका डीओसी बनता है उसका धीरे धीरे इंडिया में ट्रेंड एक बनता जा रहा है कि उसका एक्सपोर्ट जो है, अभी हमने देखा है पिछले 3-4 महीनों में एक नई चीज उभर के आई है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है। अगर आप इसकी बात करते हैं, डीडीएस की प्राइसेस इसलिए डाउन जा रहे हैं क्योंकि ओवर सप्लाई है मार्केट में इस टाइम। और मक्का का यूसेज जैसा आपने देखा, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और मक्का का यूसेज जो है इथेनॉल में भी बढ़ रहा है। अगर इथेनॉल में मक्का का यूसेज बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि उससे डीडीजीएस भी आपको मिलेगा। तो डीडीजीएस में मैं तो सर स्टॉकिंग की कोई राय नहीं देता, क्योंकि ओवर सप्लाइड है, और अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्टॉकिंग से थोड़ा परहेज करें। ठीक है। चौहान जी, मेरा भी डीडीजीएस रिगार्डिंग था बेसिकली। माय नेम इज रवि अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। एंड परचेज एंड फाइनेंस हेड ऑफ श्री बजरंग केमिकल डिस्टिलरी, छत्तीसगढ़। जी। सर, जैसे आपने पहले मीटिंग में भी कहा और अभी सर ने भी कहा कि डीडीजीएस का रेट कंटिन्यू गिरते जा रहा है, बट सर छत्तीसगढ़ में और अपना सेंट्रल इंडिया में डीडीजीएस का रेट तो सर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। पहले मेज डीडीजीएस अभी एक महीना पहले ही 16.5 रुपये तक था, और अभी हमारा 23-24 रुपये में ट्रेडिंग हो रहा है सर। तो हम्म। मेरा एक्सपेक्टेशंस इसमें, आप जब मीटिंग में भी बोले कि वो गिर रहा है, इसी टॉपिक में मेरे को पूछना था कि रेट सर एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितना तक बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। हमारा जितने भी आसपास के पार्टी हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिनसे होता है और जो डे टू डे जो इस बिजनेस में काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये अराउंड मार्च एंड तक 27-28 रुपये तक जाएगा। क्योंकि 2020 में राइस डीडीएस का रेट सर 70 रुपये गया था।
जी, देखिए राइस डीडी अभी क्या है सर, देखिए पहले डीडीजीएस में केवल मक्का ही थी जिसका डीडीजीएस बनाया जा रहा था, लेकिन अब राइस का यूसेज है वो भी डीडीजीएस में बढ़ता जा रहा है। और जो प्रोटीन कंटेंट जो बताते हैं, जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे जहाँ तक मेरे को जानकारी है, तो राइस का जो डीडीजीएस है उसको मक्का से ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। और जी आपके यहाँ कुछ आई थिंक डिमांड वगैरह निकली है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े हैं। अगर आप पैन इंडिया की बात करते हैं तो प्राइसेस पे थोड़ा स्ट्रेस है। जैसे आप बता रहे हैं कि प्राइसेस और बढ़ रहे हैं, तो जो जिन एरियाज में प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है वहां से भी एज सच कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई दी कि वो उन एरियाज में डीडीएस जा रहा है जहाँ पर प्राइसेस ज्यादा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो डीडीजीएस है वो अब पहले जैसे मक्का से बना, अब वो चावल से बन रहा है। तो डीडीजीएस की जो क्वांटिटी है, जो स्टॉक है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया में, और वो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने 40% एलोकेशन लगा रखा है कि वो आपका जो इथेनॉल है वो ग्रेन बेस्ड होना चाहिए। तो ग्रेन का इस्तेमाल तो बढ़ेगा ही इथेनॉल में। तो अवेलेबिलिटी की डीडीजीएस की मुझे लगता है कि आगे चलकर जो है वो बनी नहीं रहेगी। और प्राइसेस में मैं ज़्यादा लंबी तेजी में नहीं हूँ। तो सर पैन इंडिया में एवरेज डीडीजीएस का रेट क्या समझूं? डीडीजीएस मेज डीडीजीएस। अभी आपके यहाँ 1800 चल रहा है ना सर? मैं तो नो सर, हमारे यहाँ अभी 23.5 चल रहा है। 23.5 चल रहा है टोटल। अगर आप देखें सर, मैं 18-19 मैक्सिमम। 18-19 ओके। सर एंड वन मोर थिंग, जो मेज प्रोडक्शन जो ईयर वाइज है, वो डेटा अगर मुझे भी शेयर कर देते तो ठीक रहता सर। मैं कर दूंगा आपको, मैं जीमा को डाल दूंगा और जी विल शेयर विद यू जी। आपको। और सर प्लांट एलोकेशन जो इस बार ओवरऑल 48% दिया है पैन इंडिया, तो हम्म, उसके लिए आप भी कुछ जैसा हमारे यहाँ पर सीआईआई से और बाकी सबसे तो कंटिन्यू डिस्कशन चल ही रहे एलोकेशन बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या लग रहा है सर, कितना परसेंटेज तक बढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है सर? देखिए इनको बढ़ाना तो पड़ेगा सर, बिकॉज बहुत इंडिया में आप ये देखिए, जो इंडस्ट्री है हमारी, शुगर इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत बड़ा एक उसमें इन्वेस्टमेंट की है। मीज वालों ने की है। ग्रेन बेस्ड जो इथेनॉल जो है कंपनीज वो बड़ी हैं, डिस्टिलरी वो बड़ी हैं। कई लोगों ने अपने प्लांट्स में चेंजेस किए हैं कि अब वो राइस, पहले जैसे वो मक्का का बनाते थे, अब वो राइस का भी उन्होंने थोड़े चेंजेस किए हैं अपने प्लांट्स में, वो राइस से इथेनॉल का बना रहे हैं। ये है अभी। मैं हम्म, दूंगा ये शीट, शेयर करूंगा आपके साथ में। जी जी। थैंक यू सो मच जोहान सर। थैंक यू। Any other queries? So since we have no more questions from the participant side, let us conclude the webinar. So, Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। sir, so we are very thankful to Mr. Rahul Chauhan sir as a valuable knowledge partner. Please accept a token of appreciation from Jima. Thank you once again, sir. Thank you all for your valuable time and participation. Good evening, everyone. थैंक यू। Thank you, IGrain. थैंक यू मैम। Thank you very Thank you, sir. much. Thank you once Thank you again. very much. Thank. I Have a hope good day, sir. I have given Have a good day. Thank you.